Okay, again I am starting with that. How to convert decimal to binary. Decimal to binary. How to convert decimal to binary? Like, write down trick. What is the trick? I'm telling you the trick. Trick is that write down 1, then double of 1 is 2, double of 1 is 4 from your right hand side. From where you have to write? Write side by side with me. From your right side, you have to write 1, double of 1, 2, double of 2, 4, double of 4 is 8, double of 8, you have to write 16, double of 16, you have to write 32, double of 32, you have to write 64, and so on till your limits. You can keep continue, but this much will be beneficial for us from counting 1 to 100 in base 10 to be converted them into base 2. 10 वाले बेस से 2 वाले बेस में बनाने के लिए इतना हमें काफी होगा. व्हाट आई हैव सेड यू, आपको क्या करना है, 1 लिखना है, उसका डबल 2, उसका डबल 4, उसका डबल 8, उसका डबल 16, उसका डबल 32, उसका डबल 64 एंड सो एन 128 ऐसे लिखते चले जाएंगे जब तक आप चाहें. बट अब देखो, अब जैसे मुझे 1 का बेस 10 को कन्वर्ट करना है, 2 को कन्वर्ट करना है और 3 को कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? सी, आई नीड 1 टोटल फ्रॉम दिस. मुझे क्या चेक करना है? टोटल. टोटल चेक करने के लिए मुझे 1 चाहिए, तो मैं इसके ऊपर 1 लिख दूंगा, तो दैट इज 1. अगर मुझे 2 चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए? 2, तो यहां पे मैं 1 लिखूंगा, यहां 0 लिखूंगा, यानी 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, दैट इज 1 एंड 0. जो मुझे टोटल करना होगा, वट एवर द टोटल आई नीड, आई विल पुट देयर डिजिट्स. नाउ देखो, अब मुझे क्या करना है? 3 करना है. 3 चाहिए, तो 3 के लिए मुझे 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए, यानी 2 प्लस 1 3 होता है. तो 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1, यानी कि ये हमारा 1 1 होगा. गॉट इट? तो 3 का बाइनरी नंबर होगा 1 1, 2 का बाइनरी नंबर होगा 1 0. गॉट इट? अगेन आई एम राइटिंग what I have to write: 1 2 4 8 16 32 64 and so on. अब मान लिया, लेट्स सी, नाउ यू विल टेल मी, जैसे हमें किसका कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है 7 को. 7 का डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर क्या होगा? ओके, अब देखो 7 किस किस से बनता है? 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी मुझे 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए. अगर मैं इनको ऐड करूं तो 7 आता है. तो यानी मुझे कितनी बार लेना? एक बार 4 लेना पड़ेगा, एक बार 2 लेना पड़ेगा, एक बार 1 लेना पड़ेगा. कितनी बार? 4 कितनी बार लिया? एक बार. 2 एक बार, 1 एक बार, बस ये कन्वर्ट हो गया. 7 का बाइनरी नंबर होगा 1 1 1 बेस 2. पता लग गया? गॉट इट? कॉपी कर लो. अभी हम दोबारा लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. फिर से मैं लिखता हूं 1 2 4 8 16 32. अब देखो 64 एंड सो ऑन. उल्टी गिनती लिखनी है 1 से लेके. नाउ मैं लेता हूं 13 का बाइनरी बताना है. मुझे क्या बताना है?
13 का बाइनरी नंबर बताना है। अब देखो 13 किस किस के प्लस से बनेगा। 13 के लिए मुझे 8 चाहिए, यस। 8 एंड 4 कितने होते हैं, 12। 8 एंड 4 क्या होते हैं, 12। एंड 12 प्लस 1 13। मुझे 2 नहीं चाहिए, जो नंबर मुझे नहीं चाहिए उसके ऊपर 0। 13 कैसे बनेगा, 8 प्लस 4 प्लस 1 से बनेगा। तो जो नंबर मुझे चाहिए उनके ऊपर तो मैं 1 लिखता हूं, जो नहीं चाहिए उनके ऊपर 0 लिखता हूं। तो ये कन्वर्ट हो गया मेरा 1 1 0 1। ये मेरा बाइनरी नंबर है किसका, 13 का। गॉट इट, समझ में आया। अगेन आई विल टेक मोर डिजिट। ओके, अगेन आई एम राइटिंग 1 2 4 8 16 32 64। Let's take now 19। 19 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना। आई हैव टू कन्वर्ट 19। 19 is to be converted now. Now see, 19 के लिए मुझे क्या चाहिए, 19 के लिए मुझे 16 चाहिए, 32 तो नहीं चाहिए, 64 भी नहीं चाहिए। 16 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं 19 से ज्यादा होगा या कम होगा, दैट विल बी मोर, तो इसे 0 ले लेंगे। 16 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो 20 हो जाएगा, तो इट इज आल्सो नॉट नीडेड। जो मुझे नहीं चाहिए उसके ऊपर 0 लगाऊंगा। 16 में इफ आई विल ऐड 2 दैट विल बी 18। ओके, 18 हो गया। एंड 1 इज आल्सो एडेड 19। 19 का टोटल क्या हुआ, ऊपर से यहां से देखना है, 16 एंड 2 एंड 1। अब मैं क्या लिखूंगा, मेरा बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, 1 0 0 1 1 बेस 2। ये मेरा बाइनरी नंबर कन्वर्ट होके आ गया। गॉट इट, समझ आ गया। दैट इज द बाइनरी नंबर कन्वर्टेड। बाइनरी नंबर कन्वर्टेड, गॉट इट। Okay, now I will take it again, conversion. Let's see, you have written that on the copy. I think you have written that, that is, just a moment, 1 2 4 8 16 32 64। नाउ अब मुझे 4 बेस 10 को कन्वर्ट करना है, 5 बेस 10 को कन्वर्ट करना है, 6 बेस 10 को कन्वर्ट करना है। टेल मी व्हाट इट विल बी, क्या होगा। एंड 7 बेस 10 को कन्वर्ट करना है, किसमें, बाइनरी। टेल मी 4 का टोटल किससे बनेगा, 4 विल बी देयर। एक तो ये लेना होगा 1, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो दैट विल बी 1 0 0 बेस 2। 5 का देखो, 5 कैसे बनेगा, 5 के लिए मुझे 4 चाहिए और 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। 5 के लिए मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो दैट इज माय आंसर 1 0 1। नाउ 6 के लिए, 6 के लिए व्हाट आई नीडेड, सी व्हाट आई नीडेड फॉर 6। 6 के लिए मुझे 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 1 नहीं चाहिए। So that will be 1 1 0।
7 7 के लिए मुझे क्या चाहिए, 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, तो व्हाट इट विल बी, 111. गॉट इट, 111. ओके, नाउ सी दैट, नाउ मुझे 8 का कन्वर्ट करना है, 9 को कन्वर्ट करना है, 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 11 को कन्वर्ट करना है, 12 को कन्वर्ट करना है. टेल मी व्हाट विल बी फॉर 8. 8 किससे बनेगा, 8 के लिए मुझे 8 चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो व्हाट आई हैव टू राइट, व्हाट आई हैव टू राइट हियर. वेरी गुड अनन्या, दैट इज 1 0 0 0, मेरा कन्वर्ट हो गया, दैट इज माई बाइनरी नंबर. ये सुपर डुपर ट्रिक है which you will never find anywhere and it is very useful trick. Okay, now 9 के लिए मुझे क्या चाहिए, what I need for 9, tell me. 9 के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो 8 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 12 हो जाएगा, 2 नहीं चाहिए, 10 हो जाएगा, 1 चाहिए, तो 8 और 1 चाहिए मुझे, तो दैट इज माई बाइनरी कन्वर्जन. अब 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए मुझे 8 और 2 चाहिए, 8 नीडेड, 4 नॉट नीडेड, 2 नीडेड, 1 नॉट नीडेड, दैट इज माई बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 10. गॉट इट. नाउ 11 के लिए कन्वर्जन क्या होगा, 11 किससे बनेगा मेरा, 16 से तो बनेगा नहीं ना, 8 आई नीडेड एंड 2 10 एंड 1 11, तो 11 के लिए मुझे क्या चाहिए, 8 आई नीडेड, 4 आई नॉट नीडेड, 2 आई नीडेड, 1 आई नीडेड, दैट इज कन्वर्ट, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया ये. नाउ 12 के लिए बताइए मुझे, 12 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, व्हाट आई नीड फॉर 12. 12 के लिए वेरी गुड, 8 चाहिए, 4 चाहिए, बस 8 और 4 चाहिए, 8 + 4 is 12, दैट इज नॉट नीडेड, दैट इज नॉट नीडेड. ये 1100 नहीं है, कभी से आप 11 1 1 0 0 बोलेंगे. गॉट इट, हैव यू अंडरस्टूड दैट. दैट इज वेरी यूजफुल ट्रिक which will come to useful throughout your life. These number system will be useful for you whole over the life. Got it. Is there any confusion regarding that? Now I will say I need conversion of 25. 25 क्या होगा, 25 का टोटल मुझे ढूंढना है. I have to find the total of 25. 32 तो मुझे चाहिए नहीं, यानी यहीं से बन जाएगा टोटल मेरा 25. 25 के लिए 16 नीडेड, 16 और 8 24, 16 8 24, 24 and 1 25, टोटल हो गया मेरा. अब मुझे क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मेरा 25 का क्या होगा, 1 1 0 0 1 base 2. That is my answer. That is my answer. Got it? Understood? Got it? Now check. Tell me. I need 35. 35 का बाइनरी क्या होगा? Check it. What I needed? What I needed? 35 के लिए 32 तो चाहिए ना. I need 32. 32 में 16 नॉट नीडेड. 8 अगर मैं ऐड करता हूं 40 हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए. 32 में 4 में ऐड करूंगा, ये भी नहीं चाहिए, 36 हो जाएगा. 34 and 35. Got it? What will be my answer? 1 0 0 0 1 1. That is the my answer, my friend. That is the my answer. Got it? That is my answer. Have you got it? Now
The idea is clear to you? Is this idea clear to you? Now, tell me, what will be of 99? What will be of 99? Well done, Purvi, well done. अगर क्लास में ध्यान रखते हो, if you are in class properly and you want to understand, then you can understand better. No one can stop you to learn these quick tricks. What will be the answer of 99? 99 का total. How I have to made 99? Well, I need 64 plus 32, 98, 96. 96 and 2, 98 and 199. And it is not needed. It is not needed. Whatever is not needed, I will put 0. What is not needed, I will put 0. So my answer will be 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. That is my radix of 2. Got it? Have you got it? Is that crystal clear now? I think it must be crystal clear to you. Now, tell me the answer for 76. 76 base 10 को base 2 में convert करना है. It must be crystal clear. You have to draw yourself. What I needed, this is not needed. So my answer will be in this ratio. 1 to 64 it will be. What I have to find for 76? 64 I needed. 64 plus 6. 64 plus 6. That I needed. 64, 4 and 2. That is how much? That is wrong. 64 and 16 I not needed. 76 base 10, 64, 32 not, 16 not, 64 and 8, how much? 64, 8, 72, 72 and 4, 76, and this is 0. So my answer will be 100, 1100 base 2. That will be my answer. Got it? Now, reverse of this. Reverse of this, I have to find binary to decimal. अब क्या करना है? This is my binary number. This is my binary number. I have to convert it into decimal number. अब मैं क्या करूंगा? I will put it there. 1 0 1 0. Let's calculate it. Now directly मैं इसमें रख दूंगा 8 1 जा 8, 4 0 0, 2 1 जा 2, 1 0 0. Total is 10. So this is my radix 10 is 10. 10 base 10. This is my answer. Got it? Now one more. What will be the of this one? Where I will put 1 1 1 1. Let's do multiply. 8 1 ja 8, 4 1 ja 4, 2 1 ja 2, 1 1 ja 1. How much? 15. That is of base 10.
That is the vice versa. So my answer will be 15. That is binary to decimal. ये उल्टा है. पहले मैंने आपको सिखाया था डेसिमल से बाइनरी. अब बाइनरी से डेसिमल भी इसी फार्मूले से होगा. Got it? Better you got it. Now tell me what will be the answer for that. 10101. Let's 10101. Calculate it. What it will be? 1 into 16 plus 0 into 8 plus 1 into 4 plus 0 into 2 plus 1 into 1. What will be the answer? That will be, what is the answer? Now tell me, what is the base 10? Yes, that is 21, my friends, 21. Good. Now tell me, what will be the answer for this? Do yourself. What will be the answer of this? This is binary. You have to convert it into decimal. Convert it into decimal. 1, 2, 4, 8, 16, 32. What will be my answer? Yes, very good. That will be 23. Well done. That is 23. Well done. Well done. So binary to decimal and decimal to binary. You have learned both way. दोनों तरीके आपको आ गए होंगे. Now tell me what will be for this. I have given it hard. That is hard. Tell me what will be the answer for that. Find the answer very fast. Write down number 1, 2, 4, 8. Up to where you have to write? Up to 128 you have to write. Well done, Ananya. Well done, Nandi. Anya Garg has given the answer first. Anya Arora, Nandini Garg. Only 3 persons have given the answer. What about others? Akar Strong. That is wrong, beta. It must be crystal clear to you now. I don't think so that you needed me. That will be 174. See, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. I need 128. It will be more. I need 32. It will be more. I need 8. I need 4. I need 2. That is 0. So that will be 174 will be total. 174 will be the total. Okay. Now convert binary to decimal to binary. What will be the 38 binary conversion?
38 binary conversion will be what? Yes. Now tell me, my friends, tell me, what will be the binary conversion of 38? Yes, I need 32. It will be more. It will be more. 36, 38. I need this one. So my answer is 1 0 0 1 1 0. Well done. How much I needed to calculate 99? You have to tell me the answer for 99. What will be the answer for 99? Convert it into 99. Yes. 1 1 0 0 0 1 1. Perfect. How come? 64 plus 32, 96. 96 more, that is 100. 96 plus 2, 98, and plus 1, 99. Okay, got it? Now, what will be the conversion of binary number of this? See, again, 1 2 4 8 16 32 and so on. So this number I will put here 1 1 0 1 0. So it is 0. It is also 0. So what I have to add? 8 plus 2 plus 1. Give answer only one time. That is 11. That is 11. Simply, if binary conversion there, directly put there. 0 will be cut. Add them. Got it? Tell me, what will be the decimal conversion of this? What will be decimal conversion of this? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512. Till you want to go, you can go. I need 1101. So I will write here from 1 0 1 1. यहीं पे मेरा आंसर मिल जाएगा. That will be 0. So what will be total? 8 plus 4 plus 1. That is 13. That is 13, my friend. That is 13. Okay. Now, tell me question answer of this. 110 base 2 plus 111 base 2 plus 1010 base 2 into base 2. Do this question. How you will do? You don't know addition of binary. What you will do? First binary to decimal. इसका decimal बनाओ, इसका भी decimal बनाओ, इसका भी decimal बनाओ. Then you will get total in decimal. Then in last you will convert into the binary. 22 is I need it in base 2. 22 answer is wrong. 22 never come in base 2. You have to tell it me in base 2.
This is wrong, my friend. This is wrong. What it will be? 1, 2, 4, 8, 16, 32. What it will be? 4 and 2, 6. What it will be? 4, 2, 6, 1, 7. What it will be? 8 and 2, 10. 6 plus 7 plus 10 is 23. Now it is 23 base 10. But what I have asked? I have asked your question answer into binary. Now convert 23 into binary. Convert 23 into binary. See what it will be? 16 and 4 and 2 and 1, and it will be 0. So answer will be 1, 0, 111 base 2. That will be my correct answer, not this. This will be my answer. What is asked? You have to check what is asked. Got it? Is it clear? It must be crystal clear to you. Okay, now one more question for you. You have to tell me this base 2 multiply by this base 2 multiply by this base 2 equal to base 2. What will be the answer here? What will be the answer here? Now do that. What is the technique? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. First of all, convert this. 68 for 12, 12 and 2. 14 and 1, 15. First one is 15. Base 10. Now convert this. 4, 2, 6, 1, 7. That is 7 base 10. Now this one. 2 plus 1 is 3. That is 3 base 10. Now multiply. Multiply what? 15 into 7 into 3. 15 7 ja 105 into 3. That is 3 5 ja 15. That is 315. Now 315 is base 10. What I needed? Base 2. So I need 256 more to convert it into 315. 315 will be total of what? 256 needed. 120 is not needed. It is 64 needed. 64 will be added. No. That will be more than 315. 32 will be added. $16 will be added. Convert. 315 will be what? Got it? So do these feat at home, and this will be useful tricks for you all, which you have learned binary to decimal and decimal to binary. Both digit conversion, I have told you about that. Okay? Is it clear now? For the day, we will finish this class, and I think you have better understand that
You have to show me your copy, please. And please share your copies. How many pages you have filled up? Tell me. You have to send your copies back on my WhatsApp number. Okay. 76, 94 pages, 60 to 55 pages. Well done. And you are learning very new things. Shivagya, very well. Ananya, near about camera. Five or six pages you can send me. I will check it out, then I will send you back. 5 or 6 pages. Thank you, Nandi. Shivagya, only 20 pages? It must be more than 100 pages, what I have taught you in the last times. What's going on? It must be more pages, beta. It must be more pages. $64. Yes. Have you learned all the tricks which I have told you in the whole way? Since May, I am with you. May, June, and July. This is the 3rd month. We are learning new things. A lot of new things you are learning. That will be very useful in your future. When you will grow, that will be very useful for you. Thank you, Tanisha. Thank you. Tanisha is writing, sir, I like your class very much. Tanish Tyagi is writing. Ananya Garg is writing, yes, sir, amazing class. Well done. A good compliments give us the feather in our cap. You can say few words. And Shivagya Tyagi is writing, amazing and helpful class. Well done. Shivagya is just a student of 6th class, and even she is performing well. Sir, very good and useful class. Ananya. Nishtha is writing, nice class. Well done. And you think that you are in 6th, 7th, 8th, so little class. When you will go in higher class, how much your mind will be developed. Akash Yagi is writing, sir, very tricky class. Shristian is writing, amazing class and useful class. Oswald Burman is writing, amazing class. This will help in future. Even your big senior classes as well. And Harshita is writing, sir, I like this class and it was very amazing and interesting class. Urvia Karwal is writing, I also like your class as it is used in our studies. It makes study easier. Well done. Well, great guys. You all are great guys. Thank you very much for your love and affection. And bye-bye. See you again. We'll meet on Monday at 4. कल Monday है. कल हमारा political science का topic होता है और history का. History and political science on Monday. Do that. That is useful in your class curriculum also. Okay. Tomorrow I am going to tell you Mughals. कल मैं आपको बताऊंगा मुगल साम्राज्य के बारे में. सबसे पहले कौन आया, कौन गुलाम वंश था, who came after that. Okay, just join this class for the medieval India. Okay, got it? Bye bye. See you again.